Welcome back. If government had to financially assist in treatment of his wife could have been saved. Journalist Tukaram Govekar lost his wife due to prolonged illness and insensitivity of the Information Department. Goa Union of Journalists has condemned the act and has demanded thorough probe as a person lost her life due to red tapeism of Goa government. Tejashree Govekar, wife of Lokmat Madgaon reporter Tukaram Govekar, died following prolonged illness. Tukaram Govekar alleged that his wife died as government could not provide him with needed and rightful financial assistance. He had demanded assistance to cope with the medical expenses through Patrakar Kritatnyata Nidhi scheme. But the administration was in no mood or mode to show even iota of Kritatnyata. पण म्हाका पत्रकार निधी म्हाका शेवटपर्यंत मेळ्ळी ना. जर तेजश्रीच्या जर एका उपचारा खातीर जर पत्रकार निधी मार्फत जर म्हाका आर्थिक मदत जर मेळ्ळी तर कदाचित तेजश्री वाचपाक शकले असते अशें म्हाका तरी दिसून येता. पण आज हांव अशें म्हणून सांगूं सोदतां की जर तेजश्रीक जर ती मदत मेळ्ळी ना बरें आसा, म्हाज्या जे नशिबान आसलें तें घडलें. पण असो प्रसंग दुसऱ्याचेर तरी सरकारान ही पाळी केन्नाच हाडची ना अशें म्हाका सांगितशें दिसता. हें जे निधन जे जालां तेका पूर्णपणे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट खातें जे आसा, यंत्रणा जी आसा ती जबाबदार आसा आनी ती अपयशी ठरला अशें हांव ठामपणान सांगपाक सोदतां. Goa Union of Journalists has condemned the act and has demanded thorough probe. They have also blamed the government for negligence in dealing with this case. खूप वाईट दिसता की मनीस मेल्यानंतर पर्यंत मरपर्यंत शासकीय यंत्रणा रावता. खूप स्लो गतीन फायलीचे मुवमेंट जाले. ते पूर्ण योजनेचो फेराडो घेवपाची गरज निर्माण जाल्या. 6 ते 8 महिने जाले तेका फावटी मारून प्रत्येक मंत्री आमदार ब्युरोक्रेट सगळ्यांकडे मेळ्ळे आसा तरी तांकां ते मेळोंक ना. म्हाका दिसता की अशें जावचें न्ही. जर हें जालां जाल्यार ताची योग्य चवकशी जावची. गोंय सरकाराच्या हॉस्पिटलांनी ट्रीट जावंक शकता. ती ट्रीट जावपा खातीर पत्रकारांक एक हेल्थ कार्ड करचें. दुर्दैव अशें दिसता की हें सरकार इतलें असंवेदनशील जाल्लेलें आसा की तुकाराम गोवेकर गेली 8 महिने ह्या योजने खातीर फावटी मारून सुद्धा ताका शेवट पर्यंत आपल्या बायले खातीर ह्या योजनेचो लाभ मेळोंक ना. माहिती आणि प्रसिद्धी खातें हे एकदम निष्क्रिय खातें जाल्लेलें आसा. माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचो जो संचालक आसा अरविंद बुगडे हो अशा पद्धतीन कित्याक वागता हें म्हाका कळना. We contacted the Director of Information and Publicity, Arvind Bugde, who handled this case that eventually led to death of a person. However, he was unavailable for comment. Bureau Report, Prudent. Uniform Civil Code should be implemented all over the country. Goa Governor Mridula Sinha has pressed for Uniform Civil Code in India. Governor Mridula Sinha, while speaking to media, said in her recent visit to Delhi, she has discussed the Goa Civil Code and Swachh Bharat Abhiyan with Prime Minister Narendra Modi. यहाँ की राजनीतिक की सब परिस्थिति, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यहाँ समाज में हार्मनी है, ये सारी बातें मैंने कही. हमने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत दिनों से मैं इसके लिए प्रयास करती हूँ, सारे देश में लागू होना चाहिए जैसे गोवा में है, और उसके कारण गोवा में हार्मनी है और सरकार भी ठीक ठाक चल रही है. ये सब बातें थोड़ी सी बताई. Governor, when questioned, denied to comment on the fake degree controversy of PWD Minister Sudhin Dhavlikar, but cleared her stand on the fake degrees issued being debated at national level. मैडम ये फेक डिग्री के बारे में एलिगेशन कर रहे हैं. नहीं, इसके बारे में डिटेल नहीं जानती हूँ तो मैं आपको नहीं बता. मैडम अभी इंडिया में फेक डिग्री का बहुत इशू चल रहा है, इसके लिए आपका सही. चलिए कोई बात नहीं, फेक चल रहा दुनिया में तो बहुत बुराई है. चावल की थाली में हम लेते हैं भात पकाने के लिए, महिलाएं लेती हैं, उसमें बहुत सारे कंकड़ हैं. एक एक कंकड़ को चुन चुन के महिलाएं जैसे बाहर निकालती हैं. जो भी प्रदूषण आया है वो धीरे धीरे निकलेंगे. इतना बड़ा समाज है. Sinha wants non-government organizations to be called voluntary organizations and not the NGOs. मेरी एक मान्यता है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को अपने को इंट्रोड्यूस कराते हुए NGO नहीं कहना चाहिए. NGO जो नाम है नॉन से शुरू होता है, तो जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है वो समाज के निर्माण में पॉजिटिव काम करते हैं. नाम उनका नॉन से कैसे चलेगा? NGO नहीं कहना है. मैंने ये बात प्लानिंग कमीशन में भी कही, वहाँ NGO शब्द हटा दिया गया है. आज मुझे थोड़ा समय कम था तो मैंने कहा कि मैं बाद में अभी लिखित रूप में सरकार को भी भेजती हूँ. NGO नहीं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. Mahesh Ghadi with video journalist Omkar Farari for Prudent.
Baina Hudman occupants are on the toes to save their shelter. Several families submitted their documents to Mormugaon Mamlatdar on Tuesday, claiming their stay in Baina before 1995. High Court had cancelled demolition order of around 153 hutments in Baina, asking them to prove their occupancy at Baina prior to 1995. The occupants have sought a more 15 days' time to submit documents supporting their claim. 153 occupants out of 203 from Baina had approached the High Court for the relief against the demolition order by the district administration. High Court has set aside the demolition order. High Court has set a deadline till 23rd June for the occupants to present a documentary evidence before the Revenue Authority supporting their claim of occupancy prior to 1995. Accordingly, the families submitted their documents to Mormugaon Mamlatdar on Tuesday. अपील आम्ही आमकां मीन्स अ वीक और 15 डेज टायम दी कित्याक तर आमकां एंगेज करचो पडटलो एडवोकेट कित्याक आमचे चड जो लोक आहा पळय ते इलिटरेट आहा तेजे डॉक्युमेंट मातशे एफिडेविट बी करून दिवचे पडटले क्लियर डॉक्युमेंट दिवपाक आमकां मातसो टायम लागतलो ताका लागून आमी हें केलां. The occupants have asked for more 15 days time to present the documentary evidence. ऑर्डर मेळ्ळी की 23rd हियरींग मीन्स डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करपाक मामलेदाराक पूण सकाळी जेन्ना आमी एप्लिकेशन दिलें मामलेदाराक की आमकां मातसो टायम वाडोवन दी म्हणून कित्याक आमकां एडवोकेट एंगेज करपा आशिल्ले पूण तो सकाळी कसो आयकनाशिल्लो मागीर आमचो एडवोकेट येवन ताका खंयची तरी सेक्शन आहा मागीर कितें आहा म्हणून ताका ऑर्डर एक्सप्लेन केल्या उपरांत तो आमकां टायम दिलो आनी आतां इन्वर्ट करून घेता आमचे तेन्ना फायल केला आमी टायम मागला 15 दिसाचो टायम मागला आनी 15 दिसा मागीर फुडें केस एज पर द हियरींग चलतली एज पर द हायकोर्ट डायरेक्शन. Dishant Parab for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.